to light, lots of reflection. So this is basically for any class if you are in 6, 7, 8, 9, or 10th because lots of reflection are same for all classes. So learning made easier because when you understand it, you learn it better. Now, before starting to the main topic of laws of reflection, we will just catch up a little about what is light and what is reflection, what makes things visible, and if you know about luminous and non-luminous objects. I have an interesting question for you. If you are able to answer it, that means you're clear with the concepts. Now, so firstly, let's start with our first slide. So, just tell me if you can see this. Can you see the mountains? Can you see the flowers? Can you see this tree? And can you see the sea? So, you can basically, I know you all can see this. So, why can you see this or how can you see this? This we are going to learn in this video. Now this is my question to you. What makes things visible? हमें चीजें कैसे दिखती है? मतलब आइस से दिखती है ना? आइस से दिखती है. आइस makes things visible. मतलब आइस होंगी तो हमें चीजें दिखेंगी. No, not that. क्योंकि जब हर जगह अंधेरा होता है तभी तो हमारे पास आइस होती है ना, पर हमें कुछ नहीं दिखता. That's because eyes are not the thing that makes things visible to us. It is light. Light makes things visible to us. Am I wrong? Alright, I know I'm right. So you basically focus on this. Now let's learn about luminous and non-luminous objects. So luminous objects कौन से होते हैं? जो luminous होते हैं? Of course not. Luminous objects वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद emit कर सकते हैं और non-luminous कौन से होते हैं जो अपनी लाइट खुद emit नहीं कर पाते ये कर नहीं सकते. So luminous objects के बहुत सारे example होते हैं. Let's see the basic two examples. That is sun. Sun तो हम जानते ही अपनी लाइट देता है. And second is bulb. Bulb भी अपनी लाइट देता है. But non-luminous object क्या कभी डोर से लाइट निकलती है? क्या कभी बुक से लाइट निकलती है? क्या? Okay. Now you know that moon भी अपनी लाइट नहीं देता है. It reflects back the light of the sun. So this was what we knew about the luminous and non-luminous objects. Now let's jump about the laws of reflection. Before that, we will study what is reflection. So I hope you know what is reflection. जब लाइट एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो वो बाउंस बैक होती है लाइक अ रबर बॉल. सो दैट इज जब लाइट एक वॉल पे हिट करती है देन इट इज बाउंसिंग बैक आफ्टर हिटिंग अ वॉल. Now this bouncing of light, ये जो बाउंस करती है लाइट फ्रॉम अ सरफेस, इसे ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्रीज हैं और वाटर में एग्जैक्टली ट्रीज दिख रहे हैं क्योंकि जो लाइट है वो बाउंस कर रही है. Now I think you are all ready to go to the first law of reflection. So, what the first law of reflection says? It says that when a light falls on a mirror, then it is like sun से यहाँ से light आ रही है और यहाँ से फिर reflect होके वो हमारी eyes को दिखती है. Now this is a valuable diagram. Let me help you to understand it better. So firstly, जो blue box है, basically it is a mirror. And जो sun से जो light bounce होती है, no, not bouncing light, जो sun से जो light आ रही है जिसने mirror को strike कर रहा है, वो हमारी incident ray होती है. The light that is coming from a source. Now reflected ray कौन सी होती है? जो bounce होके हमारी eyes को दिखती है या फिर bounce, the bounce light is known as the reflected ray. अब ये normal भैया क्या चीज़ है? So this is just an imaginary line. मतलब ये एक perpendicular draw करा हुआ है to not to the rays but to the surface that is our mirror. अब यहाँ पे हमें ये I और R क्यों लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ पे समझ तो आ गया ना incident ray और reflected ray. But this is different. These are the angle of incidence and angle of reflection. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहता क्या? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमारा एंगल होता है बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का. और रिफ्लेक्टेड रे एंगल जो होता है वो होता है नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का. सो नाउ आई होप कि इन 5 टर्म्स का मीनिंग तो समझ ही आ गया होगा. मिरर, मिरर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मिरर इज अ शाइनिंग सरफेस. So this is all about mirror. Now let's learn about the first law. Now what does the first law says? That the angle of incidence. What was the angle of incidence? This I.
angle I between the incident ray and the normal. It is equal to the angle of reflection, that is between the normal and the reflected ray. So if the angle of incidence is 40 degree, then the angle of reflection will also be 40 degree. Now what does the second law says? Now second law says that जो हमारी ये इंसिडेंट रे होती है, यानी कि द रे ऑफ लाइट जो एक सरफेस पे फॉल करती है, जो इंसिडेंट रे होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो कम बैक करती है फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Point of incidence is the meeting point where incident ray, reflected ray, and normal meet. So you can just imagine which is that point of incidence. Now you can see that these all lie at the same plane. So like here the plane is mirror. Now as I said, an interesting question is awaiting you. If the angle of incidence is 30 degree, then what would be the angle of reflection? This is just a recap for your knowledge so that you can clear up your concepts. Now, where can you answer this question? Just the comment section is made for this. Now, let's recall the features of a plane mirror. So, now we are recalling the features of a plane mirror. So, what is a plane mirror? Now, if you are in a room and it has mirror, then that is a plane mirror. If it has a dressing table, the mirror that is used for doing makeup, that is a plane mirror. प्लेन मिरर वही है जो कैलेडोस्कोप का मेन पार्ट बनाने में हेल्प करती है ना. उसके फीचर्स क्या है? तो जो भी इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होती है दैट इज इरेक्ट. अब इसका मतलब क्या है इरेक्ट? व्हाट इज दिस वर्ड? Isn't there a simple word for this? So yeah, there is. Erect मतलब होता है सीधा. मीन्स इमेज जो फॉर्म होती है सीधी होती है. और जो इमेज फॉर्म्ड होती है दैट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ तो मिरर में एकदम सेम साइज की मैं बनूंगी. मीन्स ऑफ कोर्स इट विल बी माई सेल्फ. एंड मैं जितनी दूर मिरर से खड़ी हूँ मिरर में भी मैं उतनी ही दूर खड़ी दिखूंगी. सो सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर द मिरर. ना जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है. मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. तो प्लेन मिरर की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी. तो लैटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी में क्या होता है? तो इसमें बेसिकली द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears right and the right of the object appears left. Now let's look at this slide which will help you look better. Now this helps us to know that when a student has raised his right hand but in the mirror it is look like he has raised his left hand. So this is the lateral inversion property. Now it is used in ambulance. एम्बुलेंस पे जो वर्ड एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, जैसे कि जो मिरर में जो लोग देख रहे होते हैं उन्हें वो सीधा दिखे क्योंकि मिरर में चीज उल्टी दिखती है. अगर उल्टा लिखा है तो वो सीधी दिखेगी. सो आई होप इतना तो सबको समझ आ ही गया होगा. Thank you a lot for being a patient listener to my video, and I just enjoyed making this video. Just like, share, subscribe, and comment for motivation to make much more videos like this. And don't forget to give your review and comment, and if any suggestion you are invited to give in the comment section. Thank you all.